સુરતના વરાછા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક. વિજય વોન્ટેડ નામના ઇસમે સાગરીતો સાથે મળી બુટલેગર વિજય રાઠોડને લાકડાના ફટકા અને તલવાર વડે માર મારી વિડીયો મૂક્યો સ્ટેટસ. વિજય વોન્ટેડે પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતા પોલીસ એક્શનમાં આવી. વરાછા પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી વિજય વોન્ટેડની અટકાયત કરી તો ઇજાગ્રસ્ત વિજય રાઠોડને ગંભીર હાલતમાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો. જૂની અદાવતને લઈ ઇજાગ્રસ્ત વિજય રાઠોડ અને વિજય વોન્ટેડ વચ્ચે ઘણા સમયથી ઘર્ષણ ચાલતું હતું. ઇજાગ્રસ્ત વિજય રાઠોડ દારૂના ધંધા સાથે સંકળાયેલો છે અને તેની સામે 2 વખત પાસા હેઠળ કાર્યવાહી પણ થઈ ચૂકી છે. બીજી તરફ આરોપી વિજય વોન્ટેડ પણ મારામારી સહિતના અલગ અલગ ગુનાઓનો આરોપી છે અને તેની સામે પણ 2 વખત પાસા હેઠળ कार्यवाही થઈ છે. कल रात वराछा पुलिस स्टेशन में रात को 11 बजे एक एकता नगर झोपड़पट्टी जो वराछा पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में आता है वहाँ पे एक मारामारी की घटना सामने आई। इसके तहत पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए खूनी कोशिश 1091 BNS 118(2), 115(2), 352, 324, 454 और GP एक्ट 135 के तहत फरियाद दाखिल की है। फरियादी जो है वो दीपाली बेन है जो कि वाइफ ऑफ विजय भाई राठौड़ है और जो आरोपी है इसमें जो वीडियो में दिख रहा है वो विजय उर्फ वांटेड है और उसके साथ और भी लोग हैं। ये जूनी अदावत इनके बीच में थी और ये अभी पासा से छूट के आया था। ये जो आरोपी है इसके ऊपर 4 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अमरोली, उतरान, वराछा और अमरोली में 4 FIR पहले ही रजिस्टर्ड है। और जो फरियादी है उनकी दीपाली बेन, उनके जो हस्बैंड है विजय भाई राठौड़, उसके ऊपर भी पासा 2 बार हो चुकी है और प्रोहिबिशन के 4 ऑफेंसेस टोटल रजिस्टर्ड है। इसमें आरोपी को हमने अभी धरपकड़ की है और इसकी हम पूछपरछ कर रहे हैं और आगे जो इसमें इन्वॉल्व है और क्या इसमें क्यों इसे तलवार से जो मारने का जो वीडियो में आ रहा है दिख रहा है वो ऐसा क्यों किया और क्या इसका पीछे कारण है, इसका पूरी तपास हम करेंगे।